Hello and very good afternoon to everyone, and thank you for joining us for the fifth fortnightly session organized by Knowledge and Awareness Mapping Platform. I, Arika Mathur, convener of CAM, will moderate this session today. Today we have with us Ms. Praveena Nair, Senior Instructional Designer at Inca Robotics. I welcome you, ma'am. We have with us Mr. Ashish Kumar Mittal, Project Director CAM, and Amit Kumar Shukla. He is the head capacity team. I welcome you. I welcome both of you, and I welcome you all to the fifth fortnightly session organized by CAM. Knowledge and Awareness Mapping Platform is an initiative and knowledge alliance of CSIR, NISPER, that is National Institute of Science, Communication and Policy Research, with industrial partner NCPL. CAM believes that every student is blessed with talent and aims to bring out the best in them through this platform. CAMP is really proud to be hosting this fifth knowledge sharing session for the year 2022 on robotics. So the wait is over, and as we all know that CAMP is organizing these knowledge sessions and workshop sessions on every Thursdays on fortnightly for classes 5th to 12th. These sessions are from 4 p.m. to 5 p.m. under Junior Scientist Club. Under Junior Scientist Club, CAMP is bringing many other sessions like quizzes, puzzles, challenges. So do not forget to join us every fortnightly on Thursdays at 4 p.m. As we all know, robotics has a major role in healthcare, and this session will help you and encourage you to build computational thinking in you and get years of maths and science and get you a better understanding of how robotics is helpful in our healthcare industry. I hope you enjoy this workshop, and I am also looking forward to work back at the end of this workshop through a feedback link which will be shared through the chat box. Checking your chat box because we'll be sharing lots and lots of information which will be useful for you in knowing what are the updates and announcements from the camp. Without the further, I now invite Ms. Praveena Nair, who is associated with Inca Robotics as a senior instructional designer, and she comes with a vast experience spanning 20 years in the field of client engagement, verbal abilities, training, and recruitment. She was the erstwhile center head of Cambridge Language Assessment for Kerala and a certified trainer from Cambridge Language Assessment, a division of Cambridge University. Inca Robotics Private Limited is an awarded EdTech awarded with the best Robo Lab setup in India in 2019 at the same event conducted at III. Inca Robotics dedicated towards providing the best in digital learning K-12 its most innovative physical and digital STEM-aligned program in robotics and emerging technologies. Getting the young schoolers to be future ready is the sole motto, and they promote immersive and embedded knowledge transfer. So I now request Ms. Praveena Nair to kindly address the gathering, and we all are waiting to see how robotics is helpful in the healthcare industry. Over to you, Praveena ji. Thank you so much for that incredible welcome. And I am really so excited to see a whole batch of young future makers in front of you. A very warm welcome to all of you. Kaise hain aap log? All of you doing good? Schools khul gaye, back to normal? Yes? Oh, I love those cute little thumbs up, that all of you are sending me. Thank you, Vivan. Thank you all for, responding. So, my friends, I promise you we're going to go through a very beautiful journey today. And I have a beautiful presentation that I've put together, which I would like to share with you now. So are you all ready? Yes, let me hear some noise. Yes or no? Come on. Yes, all set? Okay, I am as excited as all of you are.
Okay, let me play my presentation here. Yes, what are we going to talk about? All you young scientists and future makers here in this room, we're going to talk about the role of robotics in healthcare. Do you all love robots? Have you heard of robots? Yes, we all know what robots are, right? Now, do you know how much this particular field of robotics is contributing to healthcare? Yes, we are going to see a lot of interesting stuff today through this presentation. So just put your seatbelts on and wait, okay? Now, what are we going to look at here? Now, before I start off, friends, I want to ask you, what is the most important thing in life? लाइफ में सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए. You can type it out. I can actually read the responses here. Health, 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 being healthy and happy. Yes, of course, my dear. Madhav, yes, health is very important. Meghna, everybody is talking about health. अच्छा, महज मान लीजिए आपके बैंक में जो है 50 करोड़ रुपए पड़े हो, लेकिन आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को. इतना पैसा, इतनी खुशी, इतनी सारी चीजें हमारे हाथ में होने का कोई फायदा है? बताइए. If you have all the money in the world but you don't have a good health, will you be able to enjoy life? Definitely not, right? So I believe too, like all of you mentioned here, yes, health and wellness, health and happiness, these are two key things which are so important. सबसे अहम चीजें हमारी चीज में, हमारी लाइफ में ये दो चीजें, हेल्थ और वेलनेस. आज हम ये देखेंगे कि हमारी इस हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, हमें हेल्थी रखने के लिए, हमें खुश रखने के लिए रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी मदद करते हैं, राइट? काफी सारी चीजें हो रही है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, रोबोटिक्स के फील्ड में इतनी सारी चीजें हो रही हैं आज की डेट पे. इनमें से कुछ ड्रॉप इन दी ओशन जिसको कहते हैं, छोटी छोटी चीजें मैं आपके सामने लेके आई हूँ. सारा तो हम नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में, बट जो कुछ ऐसी चीजें जो मेरे मन को इतना छू गई थी, मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करूँ. तो क्या तैयार हो मेरे फ्रेंड्स? यस, ऑलराइट. आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर. मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ. इन लोगों को पहचानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो दीज पीपल? अगर इनमें से किसी को भी जानते हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे नाम लिखिए. अरे वाह, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वाओ, यस, आयरन मैन को कौन नहीं जानता है ना? एल्बर्ट आइंस्टाइन, टोनी स्टार्क, यस, एलॉन मस्क, वाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट गाइस. मैं जानती थी आप लोग बहुत स्मार्ट हो और आप इन सबको जानते होंगे, मुझे पक्का पता था और आपने मुझे बिल्कुल राइट प्रूव किया. यस, दीज आर ऑल पीपल वी नो, दीज आर वेरी वेरी फेमस पीपल हु आर रॉकिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आप में से कोई आप या आपके पेरेंट्स आईफोन यूज करते तो आपको पता है कि आईफोन किसके आइडिया से हमारे पास पहुंचा है? स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इतना धमाल कमाल मचा दिया है पूरी दुनिया. इनकी वजह से इतनी सारी चीजें फिजिक्स में जो है हम यूज और अप्लाई करते हैं. एलॉन मस्क, इन्होंने इतना बढ़िया रास्ता हमारे सामने रखा है, जैसे कि आपको जो है पेट्रोल, फ्यूल, ये सारी चीजें अगर दुनिया से खत्म भी हो जाए, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्राइवरलेस ऑटोनॉमस कार्स जो है टेस्ला के नाम से हम जो है बिना फ्यूल के चला सकते हैं, है ना? देखिए टेक्नोलॉजी कितनी डिफरेंट तरीकों से हमारी मदद कर रहा है. इन लोगों को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना? बट आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी सहनशीलता से, अपने इतने बड़े चैलेंजेस, इतनी बड़ी डिफिकल्टीज उनके लाइफ में आने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा कमाल दिखाया है दुनिया को. क्या आप मिलना चाहेंगे इन लोगों से? यस, एक थम्स अप या एक हैंड्स या कुछ दिखाइए मेरे को कि पता चले हाँ आप रेडी हो इन लोगों से मिलने के लिए. क्या बात है, क्या amazing, you're such a fantastic crowd, you know, and I'm so excited. So let me introduce you to few people who have really made this world a better place to live in. इन्होंने अपनी जिंदगी तो सवारी है ही, बट इसके साथ साथ उन्होंने इतने बड़े मिसाल खड़े किए हैं उन लोगों के लिए जिनके सामने इन्होंने बहुत बड़ा होप या बहुत बड़ी आशा लेके आए दुनिया के सामने. Do you look at this gentleman in the picture? आप में से कोई भी है यहाँ पे जो इनको पहचानता हो?
एक चीज तो आप जान गए होंगे, इनकी टांगे जो है, इनकी असली टांगे नहीं है नीचे, घुटनों के नीचे जो है इन्होंने बायोनिक लेग्स लगाई हुई हैं, हैप्टिक या बायोनिक से जुड़ी लेग्स लगाई हुई हैं। तो इस जेंटलमैन के बारे में क्या बता सकते हैं? व्हाट इज सो इनक्रेडिबल अबाउट दिस जेंटलमैन? Do you know this gentleman holds a PhD in biophysics from the world's best university, Harvard University? और ऐसा, और ये प्रोफेसर भी है MIT मीडिया लैब्स नाम की कंपनी में, और ये अपना एक बायोनिक्स नाम का एक कंपनी या एंटरप्राइज चलाते हैं, जहां ये सर क्या कर रहे हैं, वो लोग जिनके कुछ लोग जिनके बाजू कटे हुए हैं, जिनकी टांगे कटी हुई हैं, उनको, उनके लिए ये इतनी बड़ी मिसाल बन गया। He has created incredible bionic arms and legs, limbs for people who have lost their bodies. अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है इन सर की टांगे कैसे कटी थी? इनको माउंटेन क्लाइंबिंग का इतना शौक है कि एक बार ये वॉशिंगटन के एक माउंटेन में ये अपने दोस्त के साथ गए थे, और वहां जाने के बाद जैसे ये ऊपर पहुंचे, वहां इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी, ये बर्फ में इतनी बुरी तरह फंस गए थे कि इनको जो है फ्रॉस्ट बाइट हो गया था टांगों के नीचे। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो गई थी इनकी दोनों टांगों में। फिर जैसे तैसे, मतलब कमाल कहिए, भगवान की दुआ कहिए, जैसे तैसे बच के निकल आए उस एक्सीडेंट से। लेकिन जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब आपकी दोनों टांगे काटनी पड़े। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन हम वापस टांगों में ले आ पाए। अगर टांगे हमने ऐसी ही छोड़ दी तो आपके पूरे बॉडी में जो है गैंग्रीन या पॉइजन फैल जाएगा, एंड ये आपके जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सो व्हाट हैपेंड फाइनली? He is such an incredible brilliant guy. इन्होंने ये नहीं सोचा, हे भगवान अब मैं कैसे जीऊंगा, अब क्या होगा, मेरा व्हील चेयर में पड़ा रहूंगा क्या सारी लाइफ? नहीं, he was a very determined human being. He actually went on to study science. टेक्नोलॉजी को इन्होंने बिल्कुल अपना सबसे बढ़िया दोस्त बनाया, और टेक्नोलॉजी के वजह से ये लोग, ये सर जो है, इनका नाम है डॉक्टर हक हेयर, इन्होंने जो है बायोनिक लिम्स बनाए। और ये जो इन्होंने बायोनिक लेग्स, आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लेग्स इनकी है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या? ये लेग्स ऐसी लेग्स हैं कि इनकी जो बची हुई टांगे हैं, उस बची हुई टांगों के अंदर जो मसल्स हैं, उस मसल की मूवमेंट से इनका दिमाग अगर कहते हैं हाँ भाई चलो, तो इनके मसल्स को जो है वो मैसेज मिलता है। उस मसल्स के थ्रू इस बायोनिक लेग में जो है बहुत सारी सेंसर्स लगे हुए, ये सेंसर जो है इनके मैसेज को पहचान लेता है, और उसकी मदद से ये आराम से हमसे भी ज्यादा चल पाते हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी इन टांगों की पता है क्या है? ये अपनी हाइट खुद बढ़ा सकते हैं, 8 फुट के भी हो सकते हैं, हमसे भी लंबे। और अगर चाहे तो ये अपनी हाइट इन्हीं टांगों में कम भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह जैसे हमारा रियल लेग काम करते हैं, उसी तरह 100% जो है 100% फील के साथ, सेंसिटिविटी के साथ ये बायोनिक लेग्स भी इनकी काम करते हैं। तो बताइए, अगर ऐसे बेमिसाल एग्जाम्पल्स हमारे सामने होंगे, तो हमारे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आज वो किसी तकलीफ में हैं, तो आपको लगता है कि मतलब उनको घबराने की कोई जरूरत है? Should they worry anymore? Do you think there will be any person with an handicap in the world anymore? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है आज, कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है अपनी जो विकलांगता है उसको भी हम बिल्कुल मतलब अलग कर सकते हैं, and you can live a very normal, you know. So I would like you to meet another very wonderful lady after Dr. Hug here. देखिए, इन्होंने अपनी मुसीबतों के दौरान, you know, he has come out of life so beautiful. अगर आज आपके सामने ऐसे लोग हैं जिनकी टांगे कटी है या कोई भी प्रॉब्लम फिजिकली वो महसूस कर रहे हो, तो आप उनको जाके ये दिलासा दे सकते हैं कि सर चिंता नहीं कर, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि आपको कभी भी इतना दर्द सहने की जरूरत नहीं होगी, you know. Now let us meet the second superstar of this world. Who is this that I'm going to introduce you now? आप में से कोई भी पहचानता है इनको? This beautiful lady? कोई पहचानता है इनको? एक चीज मैं बता सकती हूँ इनके बारे में, इनका नाम है मिस क्लेयर लोमस।
यूके में रहती हैं और ये बहुत ही वंडरफुल ज्वेलरी डिजाइनर है, ये बालियां ज्वेलरी डिजाइन करती हैं। बट इनकी क्या कहानी है? व्हाई एम आई शेयरिंग हर स्टोरी विद यू टुडे? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल। इनको जो है हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक, और हॉर्स राइडिंग की वजह से एक बार इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ इनका, इतनी बुरी तरह ये गिर गई थी घोड़े से कि इनकी जो है चेस्ट से नीचे, इनके चेस्ट से नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा पैरालाइज हो गया, हिल नहीं पा रही थी। महीनों महीनों जो है इनको पूरी इनको अपना टाइम जो है इसके अंदर क्या कहते हैं, व्हील चेयर, नॉट व्हील चेयर, मतलब बेड पे निकालना पड़ा। It was so difficult for her. The life was so terrible, so difficult for her. और इन्होंने क्या किया? Was she sitting there crying कि हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं. She is such a determined personality. She actually went ahead. She took the help of technology in such a big manner that a company called Reebok, Reebok ने एक special type का suit जो है prepare किया है लोगों के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी तरह सीधा खड़ी हो सकती है। और इस सूट के, इस रीबॉक नाम है इस सूट का, एक्सोस्केलेटन द्वारा बनाया गया रीबॉक, इस सूट के पहने ये सीधा सीधा सामने चल सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज पैरालाइज्ड चेस्ट डाउन। एंड डू यू नो व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट दिस लेडी? दिस लेडी, वो अपने जैसे जो सफर कर रही है लेडीज या जितने लोग उनकी तरह पैरालिसिस की वजह से सफर कर रहे हैं, उन सब को इन्होंने जो है इतनी बड़ी मिसाल इन्होंने सबके सामने खड़ी करी है, दैट शी हैज वॉक्ड अ मैराथन। कैन यू बिलीव इट? शी हैज वॉक्ड अ मैराथन फॉर 16 days, और 16 days में इन्होंने ये पूरा मैराथन लंदन के अंदर खत्म किया है। और इन्होंने ये आज भी उन लोगों के लिए जो सफर करते हैं फिजिकल हैंडीकैप की वजह से, उनके लिए ये इतनी बड़ी मिसाल बन चुकी है दैट शी हैज कलेक्टेड मोर देन 575,000 पाउंड्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पैसा इन्होंने रेज किया है अपने जैसे लोगों के लिए जो फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से अब सफर कर रहे हैं। बट आज के डेट में ये इतनी सारी मेडल जीत चुकी है, इतनी फेमस हो चुकी है ये क्लेयर लोमस वर्ल्ड में, कि ये सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। क्या मेरे दोस्तों आपको नहीं लगता ये लोग जो है हमारे बड़े बड़े फेमस एक्टर्स या फेमस लोग जो है बिल्कुल उतना ही फेम और क्रेडिबिलिटी ये डिजर्व करते हैं, है कि नहीं? हमारे सचिन तेंदुलकर, हमारे जितने जितने बड़े बड़े प्लेयर्स एक्टर्स हैं, उनको मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, टैलेंट है, सब कुछ है, बट यू नो वन थिंग दे डोंट हैव व्हिच दीस पीपल हैव इज फिजिकल डिसेबिलिटी। बट मैं बिल्कुल इनको फिजिकली डिसेबल्ड नहीं कह सकती, अभी मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि ये लोग फिजिकली डिसेबल्ड बिल्कुल नहीं है आज की डेट पे। वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं आपकी या मेरी तरह। और किस वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है? रोबोटिक्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ये पॉसिबल हो पा रहा है। एक और व्यक्ति है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, ये 80 इयर्स के एक ग्रैंडफादर हैं हमारे सामने। इनका नाम है मिस्टर रे फिन। इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? व्हाई एम आई शेयरिंग हिज पिक्चर विद यू? I'm sharing his picture with you because this gentleman who's 80 years old, he was suffering from an aging disorder of the eyes, जिसको कहते हैं age related macular degeneration। इससे होता क्या है? एज की वजह से, उम्र की वजह से जो है आंखों की रोशनी घटती जाती, कम होती जाती है, और एक ऐसे स्टेज पे आके रुक जाती है कि बंदा जो है कुछ भी नहीं देख पाता, बिल्कुल अंधा हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी ने देखिए क्या कमाल की दोस्ती दिखाई है। एक कंपनी है जिसने बायोनिक आई जो है उसका आविष्कार किया है, जैसे कि इवन अ पर्सन हु इज कंप्लीटली ब्लाइंड, एक बंदा जो बिल्कुल नहीं देख पाता, वो पूरी तरह से, इनफैक्ट हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह वो इमेजेस देख पाएगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये चश्मा देख रहे जो इस अंकल ने पहना हुआ है, इस ग्रैंडफादर ने, दिस इज एक्चुअली अ बायोनिक ग्लास। इस चश्मे में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं, और ये जो कैमरा है ये वेव्स, किसी तरह की मैसेजेस जो है, सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर,
वो मैसेजेस हमारे जो है ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं थ्रू काइंड ऑफ अ फाइबर व्हिच इज कनेक्टेड टू द ग्लास, एंड दिस सेंड्स मैसेजेस टू आवर रेटिना इनसाइड द आई। एक छोटा सा इम्प्लांट होता है आंख के अंदर, रेटिना के अंदर। उस रेटिना को ये कैमरा जो है सारे मैसेजेस भेजते रहते हैं, और इसके जरिए हम जो है हमारे सामने जो चीज है उसको बहुत ही क्लियरली, बखूबी, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है उसकी एक एक कलर, एक एक फील को हम महसूस कर पाते हैं। बताइए, इस बायोनिक आईज के होते क्या एक भी बंदा दुनिया में आगे फ्यूचर में अंधा रहेगा? नेवर। व्हाट आर वी वरीड अबाउट? देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन। ये हक हेयर सर ने अपनी रिसर्च के दौरान कहा है कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं या टेक्नोलॉजी, हमारा रोबोटिक्स जो है हमारा इतना बड़ा दोस्त रहेगा कि दुनिया में कोई इंसान अपाहिज नहीं होगा। देयर विल बी नो disability in this world. So these are some wonderful people who have showed us that, come on, the world is definitely a beautiful place to live in, and everybody has a special place in this world. Nobody is handicapped, nobody has to suffer, right? और ये तस्वीर जो आप अपने सामने देख रहे हैं, you identify this man? Any of you who knows who this is? कभी देखा आपने ये इस इमेज, इस रोबोट को देखा किसी ने? देखा? अरे वाह, कमाल हो गया। मैं तो सोची थी आप पहली बार देख रहे होंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी that a lot of you have seen. There is excellent Aditi, Rajkaran, Sanal, Parth. Very good. I'm so happy to hear कि आप इतने informed हो आज की डेट पे। कमाल हो गया। अब इस रोबोट के बारे में अगर मैं बताऊं, ये एक 100% बायोनिक मैन है। बायोनिक मैन से मतलब क्या हुआ? ये बंदा जो है हमारी तरह सांस ले सकता है, लंग्स बनी हुई है इसकी। इस इंसान 20,000 से ज्यादा सेंसर्स लगे हुए हैं इस बायोनिक मैन के अंदर। ये अपना हाथ हमारी तरह हिला सकता है, चीजें पकड़ सकता है। जैसे हम, अगर आप एक अंडा उठा रहे हैं या ये बॉटल अगर मैं उठा रही हूँ, ये सारी चीजें ये अपने हाथ से खुद उठा सकते हैं। इनका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। आर्टिफिशियल ब्लड जो है इनके रगों से दौड़ रहा है, आर्टिफिशियल हार्ट बना हुआ है इनका। आप सोच रहे होंगे ऐसा एक रोबोट बनाने की जरूरत क्या है, क्यों बनाया गया था ये बायोनिक मैन, एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड हैविंग दिस बायोनिक मैन? This bionic man was created by Dr. Bertolt Meyer from Germany. He is from the University of Zurich, and this whole project, this bionic man is his project. Do you know why he created this bionic man? This bionic man was created to find out that which are those organs, which are those parts, which are those specific systems in a human body which can be replaced by technology. और ये जो है बायोनिक मैन आप सामने देख रहे हैं, ये इसके बॉडी में सारी ऐसी सेंसर्स और आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गन्स और सिस्टम्स लगी हुई हैं जैसे एक आम इंसान के अंदर होती है। The only thing which is missing in this bionic man is the 100% brain. वो ब्रेन की जो रिसर्च अभी चल रही है पूरी तरह इन्होंने डुप्लीकेट नहीं किया है। हो सकता है अगले कुछ सालों में इवन ब्रेन भी वहां पे तैयार होके बायोनिक मैन 100% जो है हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। आज भी अगर आप बायोनिक मैन से जाके कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है ये बायोनिक मैन, आपकी बातों का रिस्पॉन्स, आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स ये आराम से दे पाएंगे, राइट? बट ये जो बायोनिक मैन है इसीलिए क्रिएट किया गया था सो दैट वी कैन फाइंड आउट what are those body parts. If a person has, say suppose somebody has a heart failure, can technology help him by replacing his heart with an artificial body part or a prosthetic or robotic part? ये देखने के लिए ये पूरा बायोनिक मैन क्रिएट किया गया था। एंड सबसे खुशी की बात क्या है, इस बायोनिक मैन से सबसे बड़ा जो मैसेज जो एग्जाम्पल हमें मिल रहा है वो ये है कि दुनिया में कोई भी किसी भी तरह की हैंडीकैप, किसी भी तरह की प्रॉब्लम किसी को भी आ जाए, टेक्नोलॉजी के होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन हमारे पास है। So tomorrow if there is a person who has lost his kidney, there is an artificial kidney which is available. You don't have to go stay in a hospital for dialysis. हम कितने लोगों को देख रहे हैं दुनिया में जिनके पास ऑर्गन डोनर्स के ना होने की वजह से, ऑर्गन डोनेट करने वाला बंदा ना मिलने की वजह से
उनकी जान जो है चली जाती है, या वो मतलब we lose a lot of dear ones because we are not able to reach out to the donors. There are not enough organs available in the donor bank, you know. तो ऐसी situations में जो है आगे फ्यूचर में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों डरे जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल जुड़ा हुआ है हमारे साथ, है कि नहीं? What do you think, young future makers? Do you think all what I'm saying makes sense? Yes. Is it exciting? कल को हमारे जान पहचान के किसी भी बंदे को या किसी भी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम आ गई फिजिकली, हमें डरने की जरूरत है नहीं. टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज रफ्तार से जो है आगे जा रहा है एंड वी डोंट हैव टू वरी. आप इस बायोनिक मैन को देखना चाहेंगे, ये कैसा दिखता है? मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूं या नहीं? इफ यू गिव मी अ down thumbs up, I will not play. If you give me an up thumbs up, I'm going to play it right now for you. What should I do? Yes, Aditi, let's go for it. है ना? Let's see what this bionic man looks like. Here we go. ये देखिए इसकी हार्ट बनी हुई है. Are you able to hear? इस bionic man का नाम क्या है? Frank. The most advanced bionic man in the world here at Washington DC's Smithsonian Museum. Now, Frank has artificial body parts, including a pumping heart. He's modelled on Dr. Bertolt Meyer from the University of Zurich. So tell me about the purpose of Frank. Why have The purpose of Frank was to find out how far bionic technology has come already. What happens if we get all of the spare parts for human body that exist already today and put them together in one piece? What would it look like? And this is what it looks like. We have an artificial heart here, which is already used on patients, that pumps artificial blood through his circulatory system that consists of nanoparticles that can give off oxygen just like real blood. We have a first prototype of an artificial lung here, first prototype of a spleen on a chip for cleaning the blood, a first prototype of an implantable artificial kidney. How close is this to a real human? It's still very far away from a real human. Despite showing how far bionic technology has come already, this project also showed us how little advancements have been made in certain other areas. We were unable to find a replacement for the brain, for example. The most advanced bit of artificial intelligence software that we found was still very, very thick. It's really difficult to have a conversation with. Frank can actually talk as well, so can I ask him some questions? You can, actually. Okay, so I'm interviewing the world's first bionic man. So, Frank, will there be a bionic woman? I hope so. A companion would be great. But unfortunately, I am missing a few important parts. Okay, he's also got a sense of humour. One more question for you, Frank. Will there be a day when bionic people replace us humans? Currently, all of my parts are supposed to benefit humans, not replace them. But even robots have dreams. Okay, well, thanks very much, Bertolt. Thanks very much, Frank. So there you have it. He's looking for a partner. So bionic woman on the lookout. कुछ समझ आया बच्चों? Was it clear? Were you able to follow the video? क्या कह रहा था ये बायोनिक मैन? बायोनिक मैन से क्या पूछा गया था? क्या ऐसा दिन आएगा जब पूरा वर्ल्ड जो है ह्यूमन बीइंग से ज्यादा बायोनिक मैन से रिप्लेस हो जाएगा? तो बायोनिक मैन ने क्या जवाब दिया? I'm not here to replace human beings. I'm here to support humanity. हमारी मदद के लिए है ये जो है बायोनिक मैन और बायोनिक्स नाम की जो टेक्नोलॉजी है हमारे सपोर्ट के लिए. अगर किसी को हार्ट फेलियर हो जाए या किसी का किडनी फेल हो जाता है, we know that there is an option to actually help them with new part replacement, right? Okay, let us now look at the various contributions that robotics is making to this world of healthcare. Today, like I told you, as we already met a very famous personality who has a bionic arm. He can actually use his arm just like our normal hand. जब आप अंडा उठाते हैं या जब आप टेबल उठाते हैं, बॉटल उठाते हैं, आपको पता है कि इसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, सब कुछ पता चलता है हमें, है ना? बिल्कुल बायोनिक्स की मदद से ये जो है आर्टिफिशियल लिम्स और आर्टिफिशियल आर्म्स की सहायता से हम लोग जो है
हर चीज को टच और फील कर सकते हैं अपने नॉर्मल हैंड्स की तरह। आपको पता है पैरा ओलंपिक्स जो हो रही है आजकल दुनिया में, उसमें ऐसे कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनकी who have their legs or arms amputated. There are archers and shooters, who don't have an arm, but they have won medals in the Olympic events. And how are they able to do it? Because of this prosthetic bionic arm, जिसे कि नॉर्मल हैंड की तरह ये फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और कौन सी एरियाज है जिसमें हमें रोबोटिक्स मदद कर रहा है? आप देखेंगे कि रोबोटिक्स इस कदर आगे बढ़ चुका है कि हॉस्पिटल्स में देयर आर कोलैबोरेटिव रोबोट्स जो है आपके पास आके, पेशेंट के पास आके उनका ब्लड टेस्ट कर सकता है, उनका रीड, उनकी जो है उनसे बातें कर सकता है, उनसे इंटरैक्ट कर सकता है। उनको हॉस्पिटल में अकेले बैठे बोर होने की जरूरत नहीं है, उनकी दवाइयां टाइम टाइम से पहुंचा सकता है। इतने अलग अलग तरीके से जो है ये कोलैबोरेटिव रोबोट्स जो है हमारी लाइफ में, हमें हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में नर्सेस की कमी है, कई हॉस्पिटल्स में नर्सेस बहुत बिजी रहते हैं, थक जाती हैं बेचारी, इतना ज्यादा काम करके, इतने सारे पेशेंट्स को देखना पड़ता है, लेकिन वहां पे भी टेक्नोलॉजी हमारी कितनी मदद कर रहा है। देखो नर्सेस को हर बार पेशेंट के रूम में जाके हर आधे घंटे, हर 2 घंटे में बुखार चेक करने के लिए या उनका ब्लड टेस्ट लेने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बार बार जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोलैबोरेटिव रोबोट्स जो है हमारे हॉस्पिटल्स में बिल्कुल प्रेजेंट है। ये जो क्यूट सा रोबोट देख रहे हैं आप, ये जहाँ मैंने कर्सर लगाया हुआ है, ये हॉस्पिटल्स में इतनी मदद कर रहा है नर्सेस की, बिल्कुल उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद कर रहे हैं। ये उसके साथ में देखिए एक और रोबोट का पिक्चर मैंने लगाया हुआ है, जहाँ पे ये रोबोट क्या कर रहे हैं, पट्टी बांध रहा है पेशेंट के हाथ। सी everything, every space that we have, robotics is there to help us. और यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर एक मशीन के साथ खड़े, ये कौन सी मशीन है, कोई बता सकता है मुझे? बहुत ही फेमस रोबोटिक सर्जिकल मशीन है। Anybody who can give me the name? It's a very famous one. It's actually called, हमारे अमृता हॉस्पिटल में या केरला में जो है अमृता हॉस्पिटल में, आपके दिल्ली में या राजस्थान में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप इस रोबोट को पा सकते हैं। इस रोबोट का नाम है दा विंची रोबोट। ये जो है इतनी परफेक्शन के साथ, आप मानेंगे नहीं, इतनी परफेक्शन के साथ ये खुद ऑपरेट कर सकता है पेशेंट के ऊपर। और यहाँ अमृता हॉस्पिटल में पिछले 5 साल में 8000 सर्जरीज करी हैं इस रोबोट ने, और एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिनकी डेथ हुई हो इस रोबोट के ऑपरेट करने की वजह से। कितनी परफेक्शन है, सोच के देखिए। ऋषु, are you finding this interesting or are you getting it? Rishu, can you hear me, my dear? Give me a thumbs up. Gurneet, so cute. Look at all of you. You are so cute. I can see Divyam also here. Very nice. So happy to see all of you. Avni Jain, are you enjoying this session? Are you getting bored? मेरी आवाज सुन रहे हो? Aditya, can you hear me? सुन रहे हो मेरी आवाज? Anas, Srishti. Wow, look at that crowd out there. Divyam, Pratham Mittal. Wow, I'm so excited to have you. Oh, बड़ा cute सा अधर्व भी बैठा हुआ है यहाँ पे. Hi, Amya Gupta. I can see a lot of you. Anyways, fantastic. So let's move on, friends. Right? What is the next area where robotics is helping us? There are areas like 3D printing. आपने सुना है 3D printing का नाम? सुना हुआ है? Yes. 3D प्रिंटर बिल्कुल हमारे घर की जो वैसे एक प्रिंटिंग मशीन है, लेकिन 3D प्रिंटर और हमारे घर की मशीन में डिफरेंस क्या है? ये 3D प्रिंटर जो है कई तरह के बॉडी पार्ट्स को प्रिंट कर सकता है। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। सबसे पहला पिक्चर जो आप देख रहे हो जॉ की है यहाँ की। अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से ये जबड़ा अगर उसका खो जाता है या उसको रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली, he doesn't have to worry. 3D printing technology can actually get you the complete replacement for your jaw, for your teeth. Even heart is being printed out through a 3D printer. Prosthetic arm. What else do we have? Look at these legs. These are actually 3D printed legs. What you see on the right hand side,
is actually the rib cage. किसी बंदे की अगर rib cage, अगर ribs की हड्डियां भी अगर टूट जाए ना, बिल्कुल उसको उस बंदे को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग के दौरान टेक्नोलॉजी जो है आपके काफी सारे पार्ट्स जो है बॉडी के उसको रिप्लेस कर सकता है. हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट. व्हाई आर यू वरीड? एवरीथिंग इज पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी. एंड टेक्नोलॉजी की, रोबोटिक्स की दो ऐसी स्ट्रीम्स है, हैप्टिक्स एंड बायोनिक्स. इन्होंने इतना ज्यादा कमाल क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी के अंदर कि आप जो है हैप्टिक्स की मदद से आप किसी भी चीज को टच करके फील कर सकते हैं कि ये चीज हार्ड है कि सॉफ्ट है, कैसी है. जैसे आप रियल हाथ के साथ फील कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे आपकी टांगे रियल फील होंगी, आपकी हाथ, आपके उंगलियां सब रियल फील. So you can actually use this technology of touch called haptics to actually feel the world around you like real people with real body parts do. है ना कमाल की बात, है ना. और बायोनिक्स एक ऐसी चीज है जैसे कि हमारे लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस है हम उसको बिल्कुल उसी तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन हैव एन आर्टिफिशियल किडनी which through the technology called Bionics, which can work better than your real kidney. Can you believe it? So एक बंदा जिसकी डायलिसिस चल रही हो, हर हफ्ते उसको डायलिसिस के लिए, बिकॉज उसकी किडनी नहीं काम कर रही है, हॉस्पिटल जाके लेटने की कोई जरूरत. ये जो आर्टिफिशियल बायोनिक किडनी है, ये उसकी असली किडनी से ज्यादा बेटर काम करेगा. और इनको वेट करने की जरूरत नहीं है एक डोनर के लिए कि भैया कौन मेरे को डोनेट कर सकता है अपनी किडनी. इस चीज की बिल्कुल कोई आशंका नहीं रहेगी आगे फ्यूचर में. राइट? आप देख रहे हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रहा है. इवन ऐसा बंदा जिसको सुनाई नहीं दे रहा, he doesn't have to worry. You know, Bionics even has a possibility of creating artificial hearing system, through which you can hear the sound around you 100% better than a real person. I'm not joking. Look at this gentleman who's holding an egg. बिल्कुल अंडा तोड़े बिना इतने परफेक्टली कैसे पकड़ पा रहे हैं इसको? क्या इनको पता चल रहा है कि अंडे की शेप क्या है, फील कैसी है? पता चल रहा है 100%, बिल्कुल जैसे आपको या मुझे पता चल रहा है. ये बंदा जिसने बायोनिक चश्मा लगाया हुआ है, इसको दिखाई दे रहा होगा. ये तो अभी महज मूर्ति है, बट इन रियल वर्ल्ड देयर आर बायोनिक स्पेक्स थ्रू व्हिच अ टोटली ब्लाइंड पर्सन कैन सी बेटर देन यू. और पता है हमसे ज्यादा बेटर क्यों देख पा रहे हैं ये बायोनिक चश्मे की वजह से? गेस कर पा रहे हैं आप क्यों? क्योंकि इनके बायोनिक चश्मे के अंदर इतना हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है कि हमसे ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन में ये देख पा रहे हैं. है ना कमाल की चीज, राइट? यू नो, एक बार एक रेस में एक बायोनिक लेग्स वाले आदमी ने पार्टिसिपेट किया था और सबने इतना, और वो फर्स्ट भी आया था. तो लोगों ने, जो नॉर्मल लोग भाग रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है धमाल मचा दी वहां पे. उन्होंने कहा इस ऐसे बंदे को हम कभी नहीं ले सकते रेस में, क्योंकि ये हमसे ज्यादा अच्छा दौड़ रहा है. इसको कैसे पता चल रहा है कि पैर पे रखना है, कैसे कूद पा रही है, हम ज्यादा बेटर कैसे दौड़ पा रहे हैं. और ये सारा कमाल टेक्नोलॉजी का है कि नहीं? सो देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ लेके जा रहा है हमें अपने साथ, है कि नहीं? Another important thing that I want to talk about is something called collaborative robots. देखिए आज कोविड के टाइम पे आपने सबने देखा होगा कितने टेस्ट करवाने पड़े थे. कोविड का टेस्ट, कोई पास जाने को तैयार नहीं था. अरे इसके पास जाएंगे तो हमें ना हो जाए कोविड. तो ऐसे टाइम में इवन हॉस्पिटल जाने से घबरा रहे थे. ऐसे टाइम पे ऐसे रोबोट्स जो है तैयार करी, यू नो, थाईलैंड के लैब में एबीबी नाम की कंपनी जो है, उन्होंने ऐसे रोबोट्स तैयार करे हैं जो लोगों का ब्लड टेस्ट कर सके, नेसल स्वैप ले सके, पूरा टेस्ट तैयार करके एक दिन में 1800 मरीजों का टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता रखने वाली इतनी इनक्रेडिबल मशीन, रोबोट इन्होंने क्रिएट करी है थाईलैंड के. This robot can test a patient for COVID. It can bring out the test results within a few hours, within a couple of hours. इतने जल्दी तो डॉक्टर्स या लैब भी नहीं दे पाते हैं रिपोर्ट, है ना? फिर दूसरी तरफ एक और रोबोट है जिसका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, रूटगर्स रोबोट. ये जो फर्स्ट रोबोट आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जहाँ मैंने कर्सर लगाए, ये रूटगर्स रोबोट है. ये क्या काम करता है? ये आपका ब्लड टेस्ट करके आपको 36 मिनट्स के अंदर जो है आपकी रिपोर्ट हाथ में दे सकते हैं.
और क्या क्या चीजें ब्लड टेस्ट करता है ये रोबोट? ये अपनी वेन, आपकी जो वेन है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चिप लगा हुआ है इसके अंदर, ये आपकी वेन खुद ढूंढ के निकालेगा, ब्लड खुद निकालेगा, ये ब्लड टेस्ट करेगा और आपको पूरे रिपोर्ट देगा। क्या आपको वेट करना पड़ेगा लाइन में घंटों भर ब्लड टेस्ट के लिए? You have to wait for a nurse to come and take your blood test? No. Rutgers robot can do all of this for us and in such a short time frame, right? फिर यहाँ पे एक और रोबोट आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? हॉस्पिटल्स में अगर हमें दवाइयाँ चाहिए हो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचानी हो दवाइयाँ, तो ये रोबोट जो है ये अपना काम इतनी बखूबी से कर सकता है. It does not need any human support. It is an artificially intelligent robot which can sort out medicines in different cases. It can carry the medicine and it can actually give the medicines to different patients in the hospital. The doctor or the nurse doesn't have to run from first floor to fourth floor to do this job. Our friendly robot here will do that job, right? और इस robot का नाम क्या है? It is called Romeo, And there is also ये जो second, ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक सर बैठे हुए हैं जिनकी नोज स्वैब ले रहे हैं. ये इंसान नहीं ले रहा, रोबोट ले रहा है. इनकी कोविड टेस्ट रोबोट कर रहा है. सो देखिए किस तरीके से रोबोट जो है हमें हमारी मदद कर. कभी कभी हॉस्पिटल्स में नर्सेस की कमी होती है, या हम लोग जो है पेशेंट इतना हैवी होता है हम उठा नहीं पाते. अब इस प्रॉब्लम की भी हल जो है टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स हमारे सामने ले आई. कैसे? Robier के रूप में. Robier is such an incredible robot. It can actually lift and carry patients very smoothly and from one bed to the other. It can move a patient बड़े आराम से, बड़े प्यार से जो है ये एक पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड तक आराम से पहुंचा सकता है. नर्सेस को या 5-6 बंदों को आके रोबोट को उठाने की रखने की जरूरत. देखिए कितनी बढ़िया तरीके से रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर. You see this old uncle, he is suffering from Alzheimer's. He can't think, his memory is bad. He forgets to take his medicines. He's feeling lonely, he has nobody to help him. But does he have to worry? His children are not next to him. Who will take care of him? There is somebody to take care of him. Do you see that very cute robot standing next to him? Do you know what the name of this particular robot is? He's called Romeo. Romeo is such a fantastic robot. It can actually take care of elderly people. उनकी दवाइयाँ टाइम से देना, न्यूज़पेपर लाके देना, न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाना, उनसे बातें करना. No elderly person has to feel lonely. You have such an incredible friend called Romeo who can actually become your best friend in your old age. है कि नहीं कमाल की बात, है ना? All right, what is the next robot I'm talking about? There are also robots which can actually help children with some kind of mental disability. ये जो बच्चा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसको ऑटिज्म हुआ पड़ा है. और इस बच्चे की मदद कौन कर रहा है? ऑटिज्म है इसको. And who is trying to help this little young cute fellow? He has a robot called Cutie. है ना cute? ये क्यूट सा रोबोट जिसका नाम क्यूटी है. कैसे स्पेलिंग कैसी है क्यूटी का? स्पेलिंग है QT, 2 लेटर्स है QT, बट सुनने में कैसा लगता है? क्यूटी, है ना क्यूट सा. सो ये क्यूट सा रोबोट जो है इस बच्चे को पढ़ाता है, इस बच्चे के साथ बैठ के उसकी बातें सुनता है. जब इस बच्चे का टेम्पर, ऑटिज्म में क्या होता है, कभी कभी हमारा बच्चा कंट्रोल से बाहर चले जाता है, अचानक गुस्सा आता है उसको या अचानक चीजें तोड़ने लगता है. ऐसी सिचुएशंस में जो है ये क्यूटी इतना स्मार्ट रोबोट है, ये इतने अच्छे से बड़े प्यार से जो है इन बच्चों की मदद करता है. छोटी छोटी चीजें सीखने में, बातें सीखने में, इंटेलिजेंटली थिंक करने में, हर चीज में जो है ये क्यूटी इनकी मदद करता है. और इतनी प्यारी तरीके से मदद करता है कि इन बच्चों का बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, बन जाता है क्यूटी. है कि नहीं कमाल की बात? See how many things robotics is contributing to our life. Healthcare में देखिए कितना कमाल मचा रखा है robotics ने. ये जो एक रोबोट आप अभी देख रहे हैं, it segregates and puts medicines in the right box. It supplies medicines to the right department at the right time, and it does it without any human effort.
इतना स्मार्ट रोबोट है ये। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो है जो मैं आप प्ले करना चाहूंगी। Would you like to watch this video? You'll meet some wonderful robots in this video. Shall we go ahead? Yes, thank you. I see the cute thumbs up by Arhan Goel, Soumya. I can see all those cutie pies responding. So enjoy this video, guys. इसके बाद वापस हम गप्पे मार, ठीक है? All right. The Swiss company ABB has automated the dispensing of drugs in hospitals in Shanghai, can organize the storage, search, and sorting of prescription drugs, and currently only takes 10 seconds to find the right medication. Swisslog, for example. The robot can pack each pill into separate bags and then bundles them according to the prescription. The processing speed is currently 1,000 doses per hour at the University of Liverpool, where the KUKA manipulator was able to perform 688 experiments in just 8 days. The robot was programmed to work with the equipment and gave it the main parameters of the experiment, and then, with the help of algorithms, it changed the value of the variables in the experiments to achieve the best results. At the University of Thailand, the ABB's company two-armed laboratory robot Yumi creates and tests vaccines against viruses. The virus itself can also be tested by robots. Currently, only 2 machines can perform 1,800 tests a day with an accuracy rate of 99.99%. Fraunhofer's IPA's Decon Bot is just a prototype of such a robot. It's equipped with state-of-the-art sensors to detect the position of metal and reflective surfaces, as well as an image processing system. Personnel only need to train the robot once and it becomes fully autonomous. The Moxie robot is already working in a hospital in Texas. The robot is able to deliver and pick up medications, tests, patient intake kits, towels, and perform a number of other robotic tasks. Vasculogic, a startup, is bringing to the market a device designed to make blood collection safer and more efficient. The technology uses infrared and ultrasound images to identify veins. Then, a robot-controlled needle is inserted into the target vein. Artificial intelligence systems for diagnosing diseases such as cancer are being actively developed all over the world. Algorithms are being trained on databases of images of healthy and sick people. Machines learn to identify the smallest patterns and do it faster and better than humans. An even more interesting area of medical robotics is nanorobots. Scientists hope that they will soon be able to mimic our own white blood cells, fighting diseases and bacteria. Blood nanorobots could also eventually deliver chemotherapy that would be 1,000 times more effective and without so many side effects. CyberKnife is a robotic surgical system that delivers radiation therapy to tumors with millimeter-level precision. The system, invented back in the 1990s, is now used to treat cancer throughout the United States. It's a radiation source mounted on a robot that directs and maneuvers the beam so that it can treat the tumor from all sides without having to move the patient. Dutch startup MicroSure is developing Musa, a robot that provides superhuman precision in microsurgery. The system provides exceptional control and stability for microsurgeons, allowing them to perform operations that would be impossible to perform manually. For example, Musa can fuse blood vessels as small as 0.3 millimeters in width. Wow, wasn't that incredible, my friends? है कि नहीं कमाल की बात? देखिए कितनी डिफरेंट तरीके से जो है रोबोटिक्स हमारी मदद कर रहा है. यू नो, एक भी बंदा मुझे बताइए आगे फ्यूचर में जो बीमार रहेगा या जिसको जिनको जो है किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझना पड़ेगा, ऐसे लोग होंगे हमारे सामने आगे? Yes, do you think there will be people who will be handicapped in this world in the future? Definitely not. And why? Because Bilkul, Arjun, nice response. I love that. So why is it possible? It is possible because of robotics and technology. You see how beautifully it is collaborating with us. कितनी अच्छी तरीके से, कितनी तरीकों से जो है robotics हमारी मदद कर रहा है. So guys, even if you are not, if a lot of you in this room will become scientists, will become doctors, will become high flyers, definitely in life. But even if you choose different fields like banking, हो सकता है आप में से कोई IAS officer बनना चाहता है. हाथ में हाथ डाले, आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा और आपके साथ चलेगा, है कि नहीं? Am I right or wrong?
Even if you become a chartered accountant tomorrow, you will have to use softwares, robotic softwares, and that will make your life easier. आप जो आज फूड घर बैठे बैठे स्विगी में ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर आपने जोमेटो से चीजें मंगवा ली, अमेज़न से अपनी फेवरेट चीजें आपने मंगवा ली, कैसे पॉसिबल हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? आपने सोचा है कभी इस चीज के बारे में? इन सब के पीछे कौन सी चीज है? टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, है कि नहीं? सो ऑल आई एम सेइंग इज रोबोटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हमने गले से लगा लेना चाहिए. You should make it your best friend, and it will always be there to support you. It will always be there to help us, and it is already doing so much for humanity. क्या बात करें हम? Even Mars तक robot पहुंच चुके हैं, है कि नहीं? Have you heard of this robot called Ingenuity? It is already taking pictures of the surface area of Mars. What is happening in Mars? What is the temperature like in Mars? All the images and pictures हमें आज मिल पा रहे हैं. कैसे? Because there is a robot on Mars, and it can even take pictures of the Earth from Mars. How is that possible? It's possible because of robotics and technology. है कि नहीं? So friends, I hope you enjoyed this session. मैंने देखा कितने स्मार्टली आप सब बैठ के ऐसे क्या नजर लगा के देख रहे थे आप सब वीडियो को. मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दी, मैं आप सबको देख रही थी और इतना मजा आ रहा था सच्ची. I really had a fantastic time with all of you. Now I would open the stage for all of you to ask me any kind of question if you have. If it's a non-technical question, I will help you out. And कुछ भी आप पूछना चाहें तो पूछिए इस वीडियो के बारे में या आज के सेशन के बारे में. अगर ऐसा कुछ भी है आप मुझसे पूछना चाहें, please, this is just your time to ask questions. Look at all those incredible people. You can put it on the chat box. जितने questions मैं answer कर पाऊंगी मैं उसको जरूर answer करूंगी. Okay? Okay, all right. That's a very intelligent, very important question that you asked me. Chihnit Chakraborty has asked me that, ma'am, what are the implications of binding devices for the middle class Indians, as the production cost will be very high? This is such an intelligent question coming from a young future maker. How are you able to think of such a big question in that small mind of yours? Amazing. But this is a very important question. Yes, my friend, आज की डेट पे जो है बाइनेक्स और हैप्टिक्स बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है. अभी भी काफी रिसर्च चल रहा है इस फील्ड के अंदर, बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर हम जरूर ऐसे एक टाइम में पहुंचेंगे जहां जो है बाइनेक्स और हैप्टिक्स हर इंसान के लिए अफोर्डेबल हो पाएगा. राइट? अभी जो है काफी हाई कॉस्ट है, काफी रिसर्च भी चल रही है इस फील्ड में. बट देखिए जैसे कंप्यूटर पहली बार आया था, जब इंटरनेट पहली बार आया था, मकाम पे पहुंचेगा जहां पे हर इंसान जो है उसको अफोर्ड कर पाएगा. हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना है. वी विल डेफिनेटली, आवर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर वर्किंग very hard day in and day out to get these technologies to common people. Okay, what is autism? Autism is basically a mental condition where a child is not able to think as, क्या कहते हैं, irritated रहता है या थोड़ा सा जो है वो बंदा हट के सोचता है. It is a special child. A child with autism is a special child, special needs child, जो हमसे थोड़ा हट के जो है सोचता है. Maybe it could be a little slow or it could be very, very sharp in some areas. You know, अगर आप ये एक मूवी है जिसका नाम है My Name is Khan. शाहरुख खान को तो आप सब जानते हैं ना? Do you like शाहरुख खान? Yes. अगर आप शाहरुख खान से प्यार करते हैं, अगर आपको शाहरुख खान पसंद है, lot of people like, lot of people don't like. I know. Amia, I can see your reaction. Don't worry. So if what I'm saying is, this is not about Shahrukh Khan, but if you like Shahrukh Khan, there is a movie called My Name is Khan. उसमें शाहरुख खान जो है ऑटिस्टिक होता है, but very brilliant. ये ऑटिस्टिक बच्चे जो है स्पेशल होते हैं. कुछ फील्ड्स में ये इतने शार्प होते हैं जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी जो है हट के सोचता है बच्चा.
बट उनकी मदद करने के लिए जो है इतने सारे रोबोट्स आज रिसर्च की फील्ड में, रोबोटिक्स की फील्ड में हम आगे लेके आने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको एक रोबोट का नाम बताया था, क्या नाम था? बड़ा प्यारा सा नाम था, जो ऑटिस्टिक बच्चों की मदद कर रहा है। लेट मी सी हु वाज लिसनिंग केयरफुली. What was that robot called? Romeo, right? Romeo, no, sorry, Cutie. Cutie is, I'll write it down here so that you can see the spelling. Cutie is one robot. आपको कभी टाइम मिले बच्चों तो आप, मुझे पता है आप सब बहुत उस्ताद हो, so गूगल में या यूट्यूब में जाके Cutie के बारे में थोड़ा सा, yes, you're right, you already know, you know, Cutie के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, आपको प्यार हो जाएगा इस रोबोट से, इतना प्यारा रोबोट and autistic बच्चों की इतनी मदद कर रहा है. It is very very easy. Okay, somebody asked me, ma'am, who is Sophia? अरे मेरी फेवरेट रोबोट, पहली रोबोट है सोफिया, जिनको पहला रोबोट जिसको एक कंट्री ने सिटीजनशिप दिया हो. सऊदी अरेबिया ने सोफिया को फर्स्ट रोबोट टू गेट अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री इज सोफिया. शी इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट and she's so dynamic that Sophia is participating in many world forums, even UN, where she's talking about climate change, equal employment, cleaner greener environment. ऐसे काफी सारे social और economic और environmental मुद्दों पे जो है और लोगों की मदद करते हैं. मेरा फेवरेट हेल्थ रोबोट कौन सा है? ये बहुत प्यारा सवाल, ये क्यूट सवाल कैसे पूछा मुझसे? That's such a cute question. मैम आप गॉड, भगवान बैठे हैं कहीं. So गॉड टाइटल जिनका है, जिस भी बच्चे का है, उन्होंने मुझसे पूछा है आपका फेवरेट हेल्थ रोबोट कौन सा है. Such Buddha, so many robots which are my favorite. मैं कैसे एक नाम बताऊं, बहुत सारे. स्टेवी नाम का रोबोट है, पेपर है, ये रोबियर मेरा फेवरेट है, जो मदद कर रहा है नर्सेस की पेशेंट्स को प्यार से उठाने. Then there is one robot, बड़ा क्यूट सा बेल जैसा है वो देखने में. It's like a small seal rather, that is creating so much of a beauty around the world by helping old people. So Stevie hai, Romeo is my favorite, Robier. There are so many robots. I mean, एक robot का कैसे बताऊं ना, हर robot अपने आप में इतना बेमिसाल है. I have so many favorite robots, to be very frank. Okay, ma'am, can we find robots in India? Yes, of course, there are so many robots in India. If you go to hospitals, the most of the top level hospitals have the Da Vinci robot in their surgical theater, and if you go to, if you can't come to Inca Robotics, our office, if you ever happen to come to Kerala, please come to our office. We have some beautiful robots in our office space. India में काफी सारे robots हैं. बच्चे, ऐसा नहीं है कि India is definitely making lot of progress in robotics, and you will find a lot of robots in India also. Yeah. Yes, somebody has asked me another important question. Ma'am, has technology advanced so much that we can use a 3D printer to make humans and robots? We are already doing it. मैंने जो Bionic Man दिखाया था आपको, 100% Bionic Man, पूरा 3D printed है उसका. उस Bionic Man का एक पार्ट जो है 3D printed है, और इतने सारे, मेरे ख्याल 200 से ज्यादा अधिक sensors गड़े हुए हैं उस Bionic Man में. Yes, we can create 100% human structure using a 3D printer. We can. 3D printer is a kamal ki technology, if you ask me. Okay, ma'am, people say that robots save lives, but what if a robot malfunctions? And ये अब मुझे लगता है आप पिक्चर बहुत देखते हो. What if अगर रोबोट ने धूम बवाल मचा दिया तो क्या करेंगे? मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये रोबोट बनाता कौन है? अपने आप तो पैदा होके नहीं आता रोबोट. रोबोट कौन बनाता है? हम इंसान बनाते हैं. सही बात है. तो अगर हम इंसान रोबोट बना रहे हैं, तो हम जिस तरह से उस रोबोट को प्रोग्राम करेंगे, जो चीज हम करने को बोलेंगे रोबोट को, वो वही करेगा. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छा रोबोट बनाना चाहिए, अच्छी कोडिंग.
अगर आप जो है रोबोट्स के 3 लॉज आप गूगल करिए, होमवर्क है, व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स करके एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने अपने नॉवल में 3 रूल्स बनाए रोबोट्स के लिए, जाके फाइंड आउट करिए वो कौन सी 3 रूल्स है, एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग, आप सरप्राइज हो जाएंगे उसके बाद, कमाल की रूल्स जो है लॉज ऑफ रोबोटिक्स बनाए, राइट? Wow, look at all the intelligent questions. Wow, there's another very interesting question which has come from somebody. Ma'am, but robots will raise unemployment. Ma'am, अभी वैसी नौकरियां नहीं मिल रही है, और भी नौकरी चली जाएगी हम लोगों की, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, हमारा क्या होगा? देखो बच्चों, जहां तक ऑटोमेशन का सवाल है, रोबोटिक्स का सवाल है, हाँ ये बात सच है कि इन बाय 2030 more than 50% of our jobs will be automated. लेकिन अगर रोबोट्स आपको लगता है नौकरियां हमारी हाथ से ले जा रहे हैं, रोबोटिक्स के साथ साथ नए नए और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बिल्कुल उसके पहले इस रोबोट को Ma'am, we can't hear you. Praveena ji, your voice is not audible. Oh, I'm so sorry. I think it got muted. I'm so sorry. So all I'm saying, friends, is embrace टेक्नोलॉजी, ये सारी स्किल्स सीखिए आप, जो जिसकी हमें फ्यूचर में जरूरत है, आप कभी बिना जॉब के नहीं रहेंगे, राइट? सो प्लीज हेल्प योरसेल्फ, लर्न ऑल दोस टेक्नोलॉजीज बड़े स्मार्टली, यू आर ऑल वंडरफुल फ्यूचर मेकर्स, इतना कमाल का इंटेलिजेंस दिया है भगवान ने आपको। सो इन सब चीज़ों को आप इन सब चीज़ों को उपयोग करके इसको अच्छी तरह आप जो है अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट एनी जॉब एनी मोर, एंड आई कैन सी सो मेनी वंडरफुल फ्यूचर मेकर्स हियर, व्हाई शुड यू वरी? आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? बट मैम, व्हाट इफ रोबोटिक्स disappears from the earth? आपने इतनी सारी चीजें देखी पिछले 1 घंटे में, आपको लग रहा है रोबोटिक्स की वजह से हमें कोई नुकसान हुआ है या फायदा ज्यादा हुआ है? बताइए, फायदा हुआ है, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक्नोलॉजी हमारे साथ, हमारी मदद करने के लिए, तो हम इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग ना करें, बस इतना हमें दें, राइट? रोबोबियर मैंने आपको दिखाया था, रोबियर, इट इज नॉट रोबोबियर, I'll write down the spelling for you. It is Robear, R-O-B-E-A-R. It is a collaborative robot which is helping doctors and nurses in hospitals to carry the patients from one place to another. It can talk to the patient, it can interact with the patient. It is a great help, especially in hospitals where there is shortage of nurses or shortage of people to support, right? Yes, I can see all those questions flowing in. मैं बच्चों सीरियसली मैं चाहती हूँ आपके एक एक सवाल का जो है मैं जवाब दे पाऊँ, लेकिन हमारे पास एक टाइम लिमिट है, टाइम खत्म हो गया हमारा, लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार दोबारा आप सबसे मिलने का जो है सौभाग्य मिले हमें, और हम कोई और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बट मैं आशा करती हूँ आप सबको रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सरबजीत, मजा आया? क्यूटी पाई,
सरबजीत आपको देख के लगता है बहुत पढ़ाई करते हो आप हैं? I see a lot of smart people in this room, you know, Anirudh, I can see, Pavitra Bansal, Sohini Chattopadhyay, that's such a cute DP you have out there, Hannah. Arav is there, I can see Angelina, Rishu, Anusha, wow, so many wonder. I'm so excited. My shakal se lag raha hai, main bahut khush hu. Don't you see that excitement? Well, I'm also feeling sad because it is time for us to say bye-bye for the day. But sure, let us see how best and how early we can meet next time and talk about something more interesting about robotics and technology. Okay? Thank you, sweetie pies. I love you all. I had great fun with all of you. And I hope to see you all again. Okay? So bye-bye and take care. God bless you. Okay? Bye, cutie pies. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से टेक्नोलॉजी की जो है मदद करो आप जितनी टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रहे हैं. And I want to see all of you fly high in life. Okay? Which you will, for sure. Okay? God bless you, people. See you next time. Bye. Yes. Bye-bye. Yes, you can always buy a robot, Anubhav. It's not difficult. More than buying a robot, do you know it's so easy to make a robot? आपको लगता है बहुत tough है? नहीं. कोई भी बना सकता है robot. कोई भी. It's not difficult. And I'm not joking. Anybody can make a robot. Yeah, buying the robot will be costly, but making a robot will be very excited and much more cheaper. Try to make your robot. Okay? It's not difficult, I'm telling you. Bye. Thank you so much, people. Love you all. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. God bless. Okay? Thank you so much, Praveena ji. It is always very we are always honored to hear you. It is so knowledgeable. We in itself are so motivated by the way you present, the way you share the entire knowledge that you have with our youngsters here. It is truly motivational, and it is very, very inspiring to see that robotics has done so much in the field of science, and it has advanced so much. Yet there is much more to do in it, but yes, it has advanced to a level that we can think of getting into a future of robotics. And our students here are asking me constantly that, ma'am, we want to make our future in the field of robotics, so please guide us which kind of technologies or which kind of subjects which I should choose or go ahead to become a robotic engineer in the future. Right. तो बच्चों जहाँ तक robotics का सवाल है, it is one field you can embrace. It has a lot of opportunities in the future, but to get there, you will have to start loving your sciences. Physics और maths की पढ़ाई बिल्कुल जोरदार से जम के करिए, biology को प्यार करिए, chemistry को प्यार करिए, sciences को प्यार करिए, and once you master these little subjects that you're doing in school, trust me, robotics is a beautiful combination of all these things. इन सबको जोड़ के जो है robotics बनता है, और बहुत ही fun filled subject है robotics, क्योंकि आप हाथों से करके सीखेंगे robotics को. और ये जैसे मैंने कहा, कोई भी रोबोट बना सकता है, कोई इतना बढ़िया, it's not something very complicated. Any child can make a robot. आपको बस प्यार करना है इस subject से. When you love something, you just rock it. Am I right or wrong? Yeah? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आप उसमें इतनी अच्छी तरह क्यों कर पा रहे हैं आप उस सब्जेक्ट को? क्योंकि आप उससे इतना प्यार करते हैं. तो मैं वही कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी से इतना प्यार करिए कि टेक्नोलॉजी आपको इतना प्यार वापस देगा, क्योंकि आपने देखा कितना कमाल कर सकता है टेक्नोलॉजी. आपने देखे उन स्लाइड्स में, you know how technology is helping us. All you need to do is just put your passion and your love into it, and nothing is impossible, my friends. Absolutely. PCMB, whole sciences favorite. क्या बात है पलक. Congratulations, right? हर सब्जेक्ट आसान है, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है. अगर आप मेहनत करने को तैयार हो ना बच्चों, कोई आपका सक्सेस नहीं ले सकता आपके हाथों से. So just dedicate yourself to what you do. Okay? Yes. So thank you so much, ma'am. It's always a pleasure interacting with these cutie pies at camp. I always look forward to these sessions. Absolutely. Where else you get this opportunity? Thank you so much. Thank you for putting all of them together. Thank you, ma'am. Thank you so much.
Few information from my side to our campaigns here. Please like, share, and subscribe our social media channels on Facebook, Instagram, YouTube, Twitter to get the latest updates and announcements. Our next workshop is coming up. We are coming up with the next workshop on 7th of July. We will soon release the teaser and the promo on our Facebook and other social media handles. Also, we will update about the session on our website in the portal. So please do not forget to visit your log into your student panels. You will find the recordings of all the previous sessions and this session which has been conducted today in your student login. So if you want to revisit, if you want to revise, if you want to know anything which you have missed on in this session, please go ahead and log into your student panel, and you can view the recordings of these workshops the whole year. Also, we would love to hear your feedback so that we can keep improving our content and we can keep bringing such interesting workshops for you. So please go ahead and give us the feedback which is there in the chat box. You can find the link in the chat box and you can give your feedbacks. You can share your videos if you want to. You can share your videos on email us at on info@cam.res.in. You can also get the access to interesting podcasts, journals, articles, and popular magazines like CSIR, Vigyan Pragati, and Science Reporter in your student panel. You just have to go to the website, which is www.cam.res.in, and log into your panel using your enrollment number and date of birth to find the knowledge resources and the workshops under Junior Scientist Club logins. Also, we will bring some students to see robots in the coming session. In the coming months, we will send an information to all the schools. So please be stay tuned and look forward. We look forward for your entries. If you are interested to see some robots, if you want to see the updations in the robotic field, we might take some students from different parts of the states, and we will keep you informed that we will be taking students to visit the Inca robotics lab. Also, we will have a word with them, and we will invite you to have a tour at the laboratory. So thank you so much, and we'll meet you next on 7th of July 2022. Till then, take care. Tata, bye-bye. Bye, ma'am, and bye, everybody. Take Thank care. you. God bless.